And in more news from Maharashtra, after a huge drama over support for the minority Maharashtra government, the Shiv Sena and the BJP seem to have reached a compromise. Chief Minister Devendra Fadnavis met the top BJP brass on Tuesday, and once again the Chief Minister hinted at a patch-up with its estranged ally. Is the Sena-BJP alliance now imminent? Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis making a trip to Delhi to hold talks with BJP Chief Amit Shah. On top of his agenda was to find ways to repair BJP's ties with Shiv Sena. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने पूरी परिस्थिति जो है वो ब्रीफ की हुई है और मुझे विश्वास है कि हम दोनों पार्टियां जल्दी ही साथ आ पाएंगे और निश्चित रूप से हम अलायंस कर पाएंगे। जब सारी चीजें सकारात्मक है तो इसका निर्णय जल्दी होगा। Fadnavis was at the RSS headquarters in Nagpur, and here too his agenda was a possible patch-up with the Shiv Sena. But so far, the Shiv Sena is not revealing its game plan. मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी चर्चा खत्म होने के बाद ही वो बात करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी ने खुद चर्चा में हिस्सा लिया है, तो मुख्यमंत्री जी खुद बात करेंगे। Possibility of a patch-up between Sena and the BJP is being closely watched by the NCP, which too is backing Fadnavis. अब ये एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है दोनों के दरमियान, और ये कितने दिन चलता है, किस तरह से सरकार महाराष्ट्र की चलती है। हमारी इच्छा शुरू से यही रही है कि महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार दी जाए। The Sena-BJP patch-up now seems imminent, but sources tell Times Now that Sena is unlikely to get the big portfolios, as it seems reconciled to playing the role of a junior partner. Bureau Report, Times Now.